अस्सलाम वालेकुम। अंdraj paidaish, surtehal और तqazay अहम कौमी मौजू पर प्रोग्रामों का ये सिलसिला है जिसमें मुल्क के चोटी के माहिरीन बच्चों की पैदाइश के फौरन बाद इनके इंदराज के हवाले से आपसे गुफ्तगू करेंगे। माहिरीन की गुफ्तगू सुनना और इस पर अमल करना माँ बाप, करीबी रिश्तेदारों और माशरे के अहम सरकर्दा अफराद के लिए बहुत जरूरी है। खास तौर पर अहले दानिश, उलमाए कराम और पार्लियामेंटेरियन से हमारी बहुत सी तवक्कुआत थी कि वो हमारे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे अपने लिए, कौम के लिए। प्रोग्राम के मेजबान हैं राजा असद अली खान। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी और आपकी मुलाकातों का ये पहला सिलसिला है। मौजू और इससे मुतल्लिका मालूमात मजहबी और कौमी तौर पर हम सब के लिए बड़ी जरूरी और अहम है। यानी माँ बाप को बच्चों की पैदाइश के फौरन बाद इनका नाम रखना चाहिए और मुकामी तौर पर यूनियन काउंसिल में इसका इंदराज भी कराना चाहिए। हम इस ज़िम्न में मोतबर शख्सियात की गुफ्तगू सुनेंगे, मुस्तफीद होंगे और ये अहद भी करेंगे कि न सिर्फ अज खुद बल्कि अपने इर्द गिर्द अजीज़ो अकारब और जहाँ जहाँ मुमकिन हो इस पैगाम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे आज के प्रोग्राम के पहले मेहमान जनाब विल ब्रॉड नगैम्बी हैं। आप चीफ ऑफ फील्ड ऑफिस यूनिसेफ पंजाब हैं। Thank you very much, Mr. Wilbord. As you know that UNICEF is one of the foremost organization who has taken the task of birth registration to an extent the subordinating stage at certain district in Punjab. So what you have to say to the parents and the stakeholders? Thank you. I would like to call upon parents, the government and other stakeholders to ensure that every child who is born has their birth registered, because this birth registration gives the legal recognition that a child actually exists. But you have been to Punjab, for quite some time now. You know the people. Who are the foremost starter of our population, or our think tank, or intellectual or opinion leader who can really take the job of promoting this cause to the public concern? Registration of birth is a responsibility and the duty of the government. So the first stakeholder who is responsible for ensuring that every child has their birth registered is the government at the provincial, at the tehsil, and even at the union council level. But every parent also has the responsibility to ensure that their child is registered and legally known, and then to enable them to have access to services like education and healthcare. You have the experience, global experience of going country to country. How do you find the things here in Punjab and state of affairs at the senior district level, as you mentioned, and how much efforts are required for the betterment of the things? In Punjab, there has been good progress because slightly over 70% of children have their birth registered, but the 25% that are not registered are actually in millions, and that means that they are not recognized legally. So there is still room for improvement to ensure that they are also registered. There is a legal framework that exists. There are institutional structures like the union councils, the tehsil, that are responsible for birth registration. The PITB, NADRA, they all have systems for birth registration. What is needed is to speed up action to ensure that parents and other stakeholders are mobilized to register every child. As you rightly pointed out, this being the responsibility of the government, but UN is a bigger organization. UNICEF is a subsidiary of UN. What effort so far you have made side by side with the government, opinion leaders, religious leaders, and of course local government and social welfare department? UNICEF has been supporting the government of Pakistan at the provincial and at the national level, first of all, to strengthen the legal framework for birth registration, as well as the institutional framework, ensuring that the different parts of government and the stakeholders have the capacity to carry out registration of birth. We have also supported, for example, the digitization of the birth records, as well as generating demand from the community so that people can take their children to be registered. And this continues
including the training of government officials who are responsible for birth registration. Yours is a powerful voice. Yours is a voice of sincere and, of course, very keenly looking person from the outside. Can you suggest the men as partner, the husbands in Punjab, with how they can help and how they can coordinate their wives to go and have first name their children besides registering them in a local government or in a union council? First of all, with the social mobilization we are doing, it is targeting both husbands and wives. And I call upon husbands to support their wives, to work together to ensure that once a child is born, that child is registered immediately, given a name and registered immediately at the different registration centers. But I also urge the government to ensure that we bring on board another important actor, which is the hospitals, because more than 3/4 of children are born in the hospital. And if we bring the hospitals as part of the registration officials, then we will have more children registered as soon as they are born. Last but not least, how far we are away from the standard of birth registration as compared to other Southeast Asian countries? I think Pakistan has made very good progress because, as I said, over 70% of births have been registered, and so I think we are almost at par with other countries, but I would rather not focus on how we are doing compared to other countries, but focus on ensuring that those children that are being left behind in terms of having their birth registered also being registered so that they can have the benefits of being registered. We call halasheri in Punjabi to the encouragement of a highest order. The stakeholder, the UNICEF, your officials, the local government, social welfare department, the Punjab government, the legislator, the religious scholar, give them a piece of advice so that they can further incite the cause of birth registration. Thank you. Yeah, I appreciate the work that has been done in Punjab by the government, by having a legal framework, by having the different institutions with clear roles and responsibilities for birth registration. Now I call upon them all to work together to coordinate their efforts and have a stronger system that is able to have all those children born being registered, and those that have been registered on paper having their records automated and linked to other documentation systems in Punjab, so that children can access their rights to education, to health care, and to legal identity. Thank you very much, sir, for granting such an excellent interview, Mr. Wilbrod. Thank you. Thank you. ये थे जनाब विलब्रॉड नगैम्बी, चीफ ऑफ फील्ड ऑफिस यूनिसेफ पंजाब। महकमा सोशल वेलफेयर व बैतुल माल पंजाब सूबे में दुखी इंसानियत की खिदमत और फलाह बहबूद का एक अजीम इदारा है। महकमा सोशल वेलफेयर व बैतुल माल की सूबाई सेक्रेटरी मोहतरमा सुमेरा समद साहिबा अंदराज पैदाइश और इसके हवाले से जारी इकदामात की अस खुद निगरानी कर रही हैं। आइए मोहतरमा सुमेरा समद के गरा कदर ख्यालात से मुस्तफीद होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने कीमती वक्त दिया। ये फरमाइए कि जो बच्चों के अंदराज के हवाले से माँ बाप की अव्वलीन जिम्मेदारियां हैं, वो किन जरूरी डे टू डे अफेयर के लिए बच्चे के लिए या बच्ची के लिए जरूरी है? बहुत शुक्रिया जी कि आपने मौका दिया है कि मैं ये बात कर सकूं, क्योंकि आपको पता है हमारा महकमा जो है सोशल वेलफेयर का, वो तो इन्हीं चीज़ों के साथ जो है वो डील करता है कि लोगों के जो मसले होते हैं, मसाइल होते हैं, जो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से गरीब लोग हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, माजूर हैं, तो उनको क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो उसके अंदर ये हमने देखा है कि ये जो इंदराज है, पैदाइश का इंदराज करवाना, ये कितना ज़रूरी है, लोगों को कितना ये प्रोवाइड दे सकता है, और अगर ना हो तो उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। तो ये जो है, और ये है कि हमने ये भी देखा कि अक्सर बच्चों के तो करवा भी लेते हैं, कम करवाते हैं, क्लीन करवा लेते हैं, लेकिन बच्चियों के तो बहुत कम इंदराज होते हैं, खास तौर पर हमारे साउथ में। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आइन के नीचे बच्चे और बच्चियां बराबर हैं। माँ बाप के लिए भी मतलब जाहिर है कि ये तो हम नहीं कहते हैं कि बच्ची जो है वो माँ बाप को कम प्यारी है बच्चे से।
تو جب آپ کو اپنے بچوں سے اتنا پیار ہے تو پھر آپ کی ذمہ داریاں بھی ہیں، اور اس میں ایک یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے پیدائش کا اندراج کروانا ہے، کیونکہ اس کو اندراج کرانے کے لیے سب سے پہلے تو حکومت جو ہے اس بات کو تسلیم کرے گی کہ ہاں یہ بچہ اور یہ بچی جو ہے یہ پیدا ہوئے ہیں اور یہ یہاں مطلب ایگزسٹ کرتے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ان کی طرف ہماری کوئی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر ہم نے کوئی حکومتی جو ہے ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو ہمیں وہ اس میں مردم شماری میں اس کا کام آئے گا، کل کو جو ہے ان کی باقی کوئی ہمارے اگر مراحت آتے ہیں صحت کے حوالے سے یا تعلیم کے حوالے سے یا کسی بھی اور مرد کے اندراج پیدائش کے اندراج کے سرٹیفکیٹ کے بغیر آنے ہی نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ان کا آپ پیدائش کا اندراج کروائیں۔ محکمہ سماجی بہبود اور بیت المال ایک بڑا ادارہ ہے اور اس کی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ جو مرد حضرات ہیں ان کو ظاہر ہے کہ جو ماں ہے وہ تو فوراً یہ بات چاہے گی، یہ مین ایز پارٹنر کتنا ضروری ہوگا کہ باپ اپنی ذمہ داری محسوس کرے اور بچے کا فوراً اندراج کرائے؟ جی شکریہ۔ دیکھیں ظاہر باپ میں تو بالکل ماں کا ظاہر ہے کہ ہوتا ہے کہ ماں کا ہمیں بھی پتہ ہے، اور مطلب میں خود بھی ایک ماں ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ بچے کے ساتھ جو ایک تعلق ہوتا ہے تو وہ تو بہت سی مائیں جو ہوتی ہیں وہ تو بہت زیادہ مطلب ایک دم سے چاہتی ہیں کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو تو اس کو دنیا کی ہر چیز مل جائے، اور ظاہر ہے کہ باپ بھی یہ تو بالکل بات سچ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی باپ کا پیار کم ہوتا ہے، لیکن چونکہ آدمیوں کو اکثر جو ہے خاص طور پہ ہمارے دیہی علاقوں میں وہ اس طرح کا رواج ہوتا ہے کہ عورتیں زیادہ باہر نہیں نکلتے، آدمی نکلتے ہیں اور طرح طرح کی مشکلات کا آدمیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو ہمارا سماج ہے اس میں بھی بہت طرح طرح کی جو ایسی باتیں ہیں جو کہ ایکچولی کے آڑے آتی ہیں وہ بھی مردوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں، اور اس کے خلاف آواز اٹھانا جو ہوتا ہے وہ آسان کام نہیں ہوتا ہے، لیکن اب وقت بدل گیا ہے۔ اب مردوں کو جو ہے وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کو اپنی اولاد زیادہ پیاری ہے یا سماج کے غلط روایات زیادہ پیارے ہیں نا، تو مردوں سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اپنے خاندان کے لیے کھڑے ہوں گے اور جو ان کے لیے بہتر ہوگا وہ کریں گے، نہ کہ وہ کوئی فرسودہ روایات کے پیچھے پڑے رہیں گے۔ اور یہ کہ اس کے اندر یہ بالکل ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچہ اور بچی دونوں برابر ہیں، دونوں جو ہے برابر پیار کے اور ذمہ داری کے مستحق ہیں، اور ان کو مطلب ان کی پیدائش جو ہے وہ خوشی کا موقع ہے، اور خوشی میں یہ ہے کہ نہ صرف وہ شامل ہے کہ پوری حکومت ہمارا پورا ملک اس خوشی میں شامل ہے کہ یہ بچہ اور بچی اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارے لیے خوشی کا باعث ہیں، ان کی اندراج کرائیں تاکہ کل ہم ان کے لیے بہتری لا سکیں حکومت کی سطح پہ۔ ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن، اور آپ اس اسپیکٹ کو اچھے طریقے سے جانتی ہیں، وہ یہ ہے کہ جن علاقوں سے کبھی آپ نے ذکر بھی فرمایا وہاں پر جو مسجد کا مائکروفون ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ سملرلی علماء کرام اینڈ لوکل میڈیا، آپ بحیثیت سیکرٹری ان کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گی، حلا شیری دینا چاہیں گی کہ وہ اس معتبر بلکہ ایک مذہبی فریضے کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں؟ جی جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہماری جو مسجد ہے مولوی اکرام ہے وہ تو بہت ان کا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، ان کی بڑی عزت ہوتی ہے اس ایریا میں، ہر ایریا میں جہاں بھی وہ ہوتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں اس کو لوگ بہت سنتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کو جو ہے مولوی حضرات کے اوپر تو ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ لوگ سنتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس سے ان پہ اثر ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ جو بات کریں گے تو وہ ان کا بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے معاشرے کو بہتری کی طرف لے جانے میں۔ تو اسی طرح انہوں نے پہلے بھی بہت سی اقدامات میں جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دیا ہے، اچھے چیزیں کرنے میں، لوگوں کو بتانے میں، مثلاً کی ویکسینیشن ہے اس میں انہوں نے بڑی مدد کی ہے، باقی ایسی چیزوں میں تعلیم کے اندر، اور ظاہر ہے کہ وہ اسلام میں بالکل یہ ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہماری اسلامی روایات کو مولوی صاحب جو ہیں وہ آگے بڑھاتے ہیں، اس کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں اور غلط تاثرات کو ختم کرتے ہیں۔ تو میں بالکل چاہوں گی کہ وہ اپنا یہ رول جو ہے پہلے بھی ادا کر رہے ہیں اور ابھی بھرپور طریقے سے یہ جو پیدائش کی اندراج ہے اس کے اندر وہ یہ رول پلے کریں، اور بچے بچیوں دونوں کی جو پیدائش کے اندراج ہے اس کو مطلب اپنے خطبوں میں بھی بولیں، لوگ ویسے بھی آتے ہیں نماز کے لیے، اس میں بھی اس بات کا ذکر کریں تاکہ یہ کار خیر جو ہے وہ اچھی سے کر سکیں۔ اور دوسرا جو میڈیا، آف کورس میڈیا کا مجھے پتا ہے کہ میڈیا کی کتنی طاقت ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ تو میڈیا ہر جگہ ہر محلے میں پھیل گیا، اتنے اخبارات ہیں، ٹی وی چینل ہیں، تو سوشل میڈیا آ گیا ہے، تو اگین مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا بڑا اثر ہوتا ہے لوگوں کے اوپر، لوگ سنتے ہیں، اور اس کو اگر اچھی طرح اور اچھی چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے تو ایک بہت بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ تو ان سے بھی میری التجا ہے کہ پلیز یہ جو ہے پیدائش کے اندراج میں ہماری بھرپور مدد کیجیے۔ شکریہ۔
ये थी सेक्रेटरी महकमा सोशल वेलफेयर व बैतुल माल हुकूमत पंजाब मोहतरमा सुमेरा समद। महकमा समाजी बहबूद बैतुल माल के डायरेक्टर जनरल जनाब मुदस्सर रियाज मलिक की पुरजोश और जवां हिम्मत काविशों के सभी मोतरफ हैं। मुदस्सर रियाज मलिक अंद्राज पैदाइश के ज़िम्न में रवायती आगाही मुहिम के साथ साथ दीगर और जदीद जरिए ब्लॉग को भी जेर इस्तेमाल और शामिल हाल रखे हुए हैं और इसकी अहमियत पर गाहे गाहे जोर देते रहते हैं। आइए इनके गरां कदर ख्यालात, इंतजामी इक़दामात और मशवरों से इस्तिफादा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुदस्सर रियाज मलिक साहब। आप सोचते हैं, समझते हैं कि इस वक्त पंजाब के बाज़ अजला में, खास तौर पे जो जनूबी पंजाब है, सूरत हाल काफ़ी गंभीर कही जा सकती है। 30% जो है बच्चे महरूम हैं, उनका इंदराज नहीं कराया जाता, माँ बाप इस सिलसिले में कोताही करते हैं। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, बर्थ रजिस्ट्रेशन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इशू है और ये हमारे गवर्नमेंट ने इसको टेकअप किया है। यूनिसेफ के ताउन से लोकल गवर्नमेंट इस पे काम कर रहे हैं, हम अवेयरनेस पे बहुत काम कर रहे हैं इसके ऊपर, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। और मेरी रिक्वेस्ट है तमाम वालिदैन से कि अपने बच्चों को पैदाइश के वक्त इमीडिएटली करीबी यूनियन काउंसिल में उनका इंदराज करवाएं, उनकी बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाएं। उससे ना सिर्फ उनको फायदा है बल्कि हमारी कौम को भी फायदा है, हुकूमत को भी फायदा है। हमारे लिए ना सिर्फ प्लानिंग ईजी हो जाती है, उसके लिए हमें पता होता है कि कितने बच्चे होंगे और उन बच्चों को कितनी फैसिलिटीज आगे एजुकेशन की चाहिए, तालीम की चाहिए, सेहत की चाहिए, उनके लिए क्या क्या चीजें हमें बनानी है। तो हमारे पास अगर उसका इंफॉर्मेशन या डेटा ठीक होगा, दुरुस्त होगा, तो हम अच्छी पॉलिसी बना सकेंगे उसके लिए। और लोगों के लिए आसानी ये है कि अगर आप बर्थ रजिस्ट्रेशन आपकी हुई है तो आपको बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज हैं वो आपको मिल सकती हैं, जिस तरह सेहत कार्ड है, बहुत फैसिलिटीज हैं वो आपको मिल जाएंगी और आप आसानी से उन फैसिलिटीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ अजला में डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं और आपके सामने घरेलू झगड़े भी वो रिपोर्ट होते होंगे, लोग आपको बताते होंगे, मातहत अमलाई बराह रास्त भी आप ज़ाहिर के मुंतज़िम में आला रहते हैं, अजला के रहे हैं। तो ये जो वरासत के केसेस हैं, बाज़ औक़ात फिर दाखिले के मसले हैं, फिर और महरूमियाँ हैं, उम्र छुपाने की भी सूरत हाल होती है। तो किस तरीके से ये खुद एक कुनबे के लिए और फिर रियासत या हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करती है ये सूरत हाल? मसला तो गंभीर है इस तरीके से कि लोग अगर इसको खुद अवॉइड करेंगे, अगर लोग ये कहेंगे कि हम किसी वजह से हमेशा इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा कि इंडिविजुअल को कि हम इसके इंदराज ना करवाएं, कोई वजह कोई भी हो सकती है, जो आपने मेंशन की सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन उसका फ़ायदा देखें, फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। फ़ायदा एक शख्स को तो शायद उसको उस वक्त पे फ़ायदा इमीडिएटली नज़र ना आ रहा हो, लेकिन कुछ अरसे के बाद उसको फ़ायदा उसका नज़र आएगा। और जो हम पैसे गवर्नमेंट टैक्स के इकट्ठे करती है, जब उसको लगाना होता है तो सबसे अहम फैसला ये है कि हमने कहाँ पर लगाना है। कलेक्टिव जो जब उसको लगाया जाता है इज्तिमाई तौर के ऊपर, तो अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन ठीक होगी, डेटा ठीक होगा, तो इंदराज हमें पता होगा किन किन बच्चों का, कितने बच्चे मौजूद हैं, कितने लोग मौजूद हैं, अफराद मौजूद हैं, तो हम उस पैसे को सही तरीके से लगा सकेंगे। आपके पैसे ही आप पर सही तरीके से लग सकेंगे। इसमें एक अहम चीज़ ये है कि मैन एज पार्टनर, तो किस तरीके से जो खामन हजरात हैं वो बीवी की बात माने और जैसे ही बच्चा पैदा हो, खवातीन आमतौर पर इस सिलसिले में ज़्यादा संजीदा होती हैं, तो ये मैन एज पार्टनर है, ये आदमियों का यानी घर वाला जो है इसका क्या किरदार है और इसको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो अपील सबसे पहले तमाम हमारी जो खवातीन हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बेटियां, उन सबसे अपील करूंगा कि प्लीज इसमें, इस इनिशिएटिव में हमारा साथ दें गवर्नमेंट का। और घर के अंदर ज्यादा रोल तो खवातीन का होता है, खवातीन कन्विंस आराम से कर सकती हैं घर के अंदर। और जहां तक मर्द हजरात हैं, आप तमाम दोस्तों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, ये आपके दो अफराद का मसला नहीं है, ये आपकी फैमिली का मसला नहीं है, ये कौमी मसला है। तो कौमी मसलों के अंदर हम सबको मिलजुल कर हमें उसका सलूशन निकालना चाहिए। आप इसमें कंट्रीब्यूट करें, आप हमें हमारा साथ दें ताकि हम आपको रजिस्टर कर सकें। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको फैसिलिटीज भी दे सकें जो आपको रिक्वायर है, जो आपको चाहते हैं, वो तमाम फैसिलिटीज। आपको सड़कें चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको सेहत चाहिए, आपको तालीम चाहिए, आपको जो भी फैसिलिटीज चाहिए वो आपको सारी मिलेंगी। जहां पर ज्यादा अंदराज होगा वहां पर गवर्नमेंट इजीली, आसानी से फैसला कर सकेगी कि यहाँ के अफराद को उन सहूलियात का ज्यादा जरूरत है। ये थे जनाब मुदस्सर रियाज मलिक,
डायरेक्टर जनरल महकमा सोशल वेलफेयर व बैतुल माल हुकूमत पंजाब। इनसे मुलाकात का अगला हिस्सा आप आइंदा प्रोग्राम में सुन सकेंगे। इसके साथ ही अंदराज पैदाइश, सूरत-ए-हाल और तकाज़े प्रोग्रामों का ये सिलसिला जारी है, लेकिन फिल वक्त इस प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।